अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की फुल बुक एमसीक्यूज जो कि बोर्ड में के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इनमें से इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 1 में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वन बाय वन उनको रीड करते हैं और सोल्व करते जाते हैं। बेटा पहली ऑब्जेक्टिव हमारे पास है द केमिकल एनालिसिस इन विच ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड डैश एनालिसिस। तो उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। दूसरा एमसीक्यू है हाउ मेनी टाइम्स अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो वो होता है जी 68,000 टाइम्स। नंबर 3 पे है आइसोटोप्स आर सिस्टर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक वेट उनका डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। देन नंबर 4 पे है आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स व्हिच अकर इन नेचर द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर। उन 280 में से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास 40 होते हैं। टिन हैज आइसोटोप्स, टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड ion collector. The pressure of vapors maintained in ionization chamber of mass spectrometer during isotopic analysis is around 10 power minus 5 torr. Okay, next step, height of peak in mass spectrum show relative abundance to gas in combustion analysis which is that substance. तो combustion analysis में वो कौन सा substance है जी 50% KOH potassium hydroxide. ओके नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है इन कंबशन एनालिसिस वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन ड्यू टू MgClO4 ट्वाइस। जी नंबर 11 पे है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज क्लोज टू 55.5 into 6.202 into 10 power 23। ये हमारा सही ऑप्शन है। फिर है जी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.55 मिलीग्राम्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP इज 2.24 डेसीमीटर क्यूब। देन बेटा हमारे पास आता है जी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। The number of moles of carbon dioxide which contain 8 gram of oxygen is 0.25 moles. Formula mass of calcium carbonate is 1000. 1 AMU is equals to 1.661 into 10 power minus 27 kilograms. 27 gram of aluminium will react completely with how much mass of oxygen to produce aluminium oxide? So 24 grams of oxygen. The number of molecules in 1 gram molecule of carbon dioxide is that is 6.02 into 10 power 24. 22 पे है जी a pair which has same number of molecules इनमें हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम N2H4 होता है जी। The diameter of atom is of the order, एटम का डायमीटर 0.2 नैनोमीटर होता है। 1 AMU is equals to बेटा ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास दुरुस्त हैं तो ऑल ऑफ दीज। मैसेज ऑफ एटम्स रेंजेस फ्रॉम 10 पावर माइनस 27 टू 10 पावर माइनस 25 किलोग्राम्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। देन हमारे पास आता है जी हाउ मेनी आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन पैलेडियम। हमारे पास 6 आइसोटोप्स होते हैं। 1 mole of sulfur dioxide contain 6.02 into 10 power 23 atoms of sulfur. Volume occupied by 1.4 gram of nitrogen at STP is 1.12 डेसीमीटर क्यूब। और लास्ट इस चैप्टर 1 का हमारा जो MCQ है मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N into एम्पिरिकल फार्मूला। वैल्यू ऑफ N फॉर शुगर इज इट विल बी 1। ये था हमारे पास चैप्टर 1 के MCQs। अब हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs पे चलते हैं। पहला है विच सब्सटेंस इज नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो CdCl2 हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। द ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन डेसिकेटर हमारे पास ये होता है P2O5। द सब्सटेंस फॉर यूज्ड फॉर डीकोलोनाइजेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज। तो ये हमारे पास होता है एनिमल चारकोल। ये एक और स्टेटमेंट के साथ आ सकता है विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज डीकलराइजिंग एजेंट इन क्रिस्टलाइजेशन। तो वो हमारे पास एनिमल चारकोल होता है। नंबर 4 पे है अ कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स। तो बेटा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन हमारे पास 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। नंबर 5 पे है कंपाउंड अंडरगो सब्लिमेशन इज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। या इसको एक और तरह से आ सकता है द कंपाउंड विच कैन अंडरगो सब्लिमेशन। तो वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है।
नंबर 6 पे विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, नेफ्थलीन एंड सैंड को हम सब्लिमेशन के जरिए अलग कर सकते हैं. नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डोंट शो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, तो CCl4 हमारे पास सब्लिमेशन का प्रोसेस शो नहीं करता. नंबर 8 आयोडीन डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ Ki is due to formation of given species. तो आयोडीन का आयन I3 आयन जो है इसकी वजह से हमारे पास ये प्रोसेस होता है. नंबर 9 है द कलर ऑफ आयोडीन इन CCl4 सॉल्यूशन इज पर्पल कलर होता है जी. इसको एक और तरह से पूछा जा सकता है इन ऑर्गेनिक फेज कलर ऑफ आयोडीन इज, तो पर्पल कलर ऑर्गेनिक फेज में हमारे पास आता है. नंबर 10 क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड इट इज क्लासिफाइड एज डैश क्रोमेटोग्राफी, तो इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. Then a component having small value of K mostly remains in the stationary phase. Number 12, during chromatography, strip should be dipped into solvent mixture to the depth of 5.5 to 6 millimeters. Number 13, what are the units of RF value? तो हमारे पास इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ. The most common solvent used in solvent extraction is diethyl ether. Chromatography in which stationary phase is solid is called absorption chromatography. Then हमारे पास 16 है solvent extraction method is particularly useful technique for separation when the product to be separated is volatile and thermally unstable. तो तब हम solvent extraction method इस्तेमाल करते हैं. Solvent extraction method an equilibrium process is an equilibrium process and it is controlled by distributive law. Number 18 लास्ट है चैप्टर 2 का. The comparative rates at which solutes move in chromatography depend on RF value of the solutes. अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज गैसेस. इसका MCQ है जी SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 atmosphere is equals to 760 millimeter of mercury. Pressure remaining constant at which temperature the volume of gas will become twice of what it is at 0 degree Celsius. तो 546 केल्विन पे प्रेशर ट्वाइस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस ट्वाइस हो जाएगा. देन हमारे पास नंबर 4 पे आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू 55.6 into 6.02 into 10 power 23. Number 5 पे if absolute temperature of gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2, the volume of the gas will increase 4 times. Then which of the following will have the same number of molecules at STP? 280 centimeter cube of carbon dioxide and 280 centimeter cube of N2O. Then हमारे पास है how should the conditions be changed to prevent the volume of a given gas from expanding when its mass is increased. तो वॉल्यूम कैसे हमने एक्सपैंड करने से रोकना है. टेम्परेचर इज लोअर्ड, प्रेशर इज इंक्रीज. अगर हम टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें. द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो सबसे पहले ग्रेटर हमारे पास होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सबसे कम क्लोरीन गैस का. Number 9, equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of total pressure exerted by oxygen is 1/3. Number 10, density of an ideal gas can be calculated by using equation D is equals to Pm over RT. The partial pressure of oxygen in lungs is 116 torr. Partial pressure of oxygen in air is 159 torr. इनको मिक्स नहीं कीजिएगा, वैल्यूज को डिफरेंट ही रखिएगा. लंग्स के लिए प्रेशर हमारे पास 116 है और ऑक्सीजन का जो एयर में प्रेशर है वो 159 टोर है. नंबर 13, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन. ये आगे ऊपर हमने किया है, अमोनिया सबसे हाईएस्ट रखती है. एंड एब्सोल्यूट जीरो टोटल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मिनिमम. The highest temperature above which a gas cannot be liquefied is called critical temperature. ये definition भी है. The deviation of gas from ideal behavior is maximum at minus 100 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure. A real gas obeying van der Waals equation will resemble ideal gas if both A and B are small. The van der Waals equation explains the behavior of real gases.
The SI unit of van der Waals constant AR nm4 mole per square mole. There are four gases: hydrogen, helium, nitrogen, and carbon dioxide at 0 degrees Celsius, which gas shows greater non-ideal behavior. Carbon dioxide will show non-ideal behavior at this temperature. The temperature of plasma is about 20,000 degrees Celsius. Dash percent of non-universe is in plasma state. 99% हमारे पास plasma state में universe पाई जाती है. Melting point of ice on Kelvin scale at 1 atmospheric pressure is 273 Kelvin. Smell of cooking gas during leakage from a gas cylinder is due to the process of diffusion. Last पे, the spreading of fragrance of a rose of scent in air is due to diffusion. ठीक है, यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 3 का भी कंप्लीट हो जाता है. चैप्टर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में सबसे पहला है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन. Acetone and chloroform are soluble in each other due to intermolecular hydrogen bonding. Then number 3 पे order of acidic strength. हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे ज्यादा होता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड सबसे उससे कम, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी सब उससे कम, और सबसे कम HF की होती है. देन नंबर 4 पे है व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू empty spaces present in the structure of ice. Ammonia shows a maximum boiling point among the hydrides of 5A group elements due to enhanced electronegativity character of nitrogen. Number 6 है or the in order to maintain boiling point of water at 110 degrees Celsius, the external pressure should be between 760 torr to 1200 torrs. Number 7, amorphous solids can possess small regions of orderly arrangement of atoms. Diamond is bad conductor because it has no free electrons present in crystal of diamond to conduct electricity. Number 9, hydrogen bonding is maximum in water. Which of the following has hydrogen bonding in its molecule? It's ammonia. The boiling point of water at Murray Hills is 98 degrees Celsius. Sea level पे हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है. Which of the following hydrocarbon has the highest value of heat of vaporization? C6H14. Which of the following is too solid? Glass. Allotropy is the property of element. Number 15 पे है the existence of an element in more than one crystalline form is known as allotropy. When A is not equal to B and not equals to C, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, and alpha is equals to gamma is equals to 90 degree, beta is not equals to 90. तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म बनती है. Shape of graphite is hexagonal. Geometry of diamond is cubical. Which impurity makes the shape of sodium chloride crystal needle-like? Urea. The molecules of carbon dioxide in dry ice form the molecular crystals. LiF is crystalline solid and has ionic crystals. Which of the following is a pseudo-solid? Glass. Atmospheric pressure at Mount Everest is 323 torr. 24 पे है which of the following pair do not show isomorphism, that is sodium chloride and copper chloride. ये थे बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज. अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड रेजिडुअल गैसेस. द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज इट डिड नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. उसने हमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी. नंबर 4 पे है बोहर मॉडल ऑफ एटम इज contradicted by Heisenberg's uncertainty principle. The wave number of light emitted by a certain source 2 into 10 power 6 meter. The wavelength of this light is it will be 500 Newton meter. Splitting of spectral lines when electric field is called Stark effect. Quantum number value for 2p subshell are n is equals to 2 and L is equals to 1. Orbital having same energy are called degenerate orbitals. When 6d orbital is complete, the entering electron goes into 7p.
6D के बाद हमारे पास 7P में जाता है। अच्छा, ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर वो कह रहे हैं व्हाट इज X, तो X हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एटॉमिक नंबर में हमारे पास इंक्रीज आता है, तो एटॉमिक नंबर में इंक्रीज तभी आता है जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन असल में टूटता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और प्रोटॉन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाता है। नंबर 11 में है, नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनिंग, mass of an electron is 9.1 into 10 power minus 31 kilograms. When fast neutron carries nuclear reaction with nitrogen, it ejects particle alpha particle. The E by M value for positive rays is maximum for hydrogen. Value of Planck's constant is 6.625 into 10 power minus 34 joule second. In the ground state of an atom, the electron is present nearest to the nucleus. Ground state में वो nucleus के करीब होते हैं. Value of Ravel constant is 1.09678 into 10 power 7 per meter. Next है Lehman series lies in ultraviolet region. Then 19 पे है the wavelength of Lehman series lies in the region ultraviolet. ये दोनों मिलते जुलते ही हैं. नेक्स्ट है जी नंबर 20 पे द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इज 0.529 into 10 power 2 एंगस्ट्रॉम. वैल्यू ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इज 8.84 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टू इनफाइनाइट ऑर्बिटल इज डैश किलो जाउल पर मोल. 1313.31 kilojoule per mole. Spectrum of light is considered consisted of many regions. These regions are arranged in the decreasing order of their frequency as gamma rays सबसे ज्यादा, ultraviolet कम, फिर आए infrared, फिर radio frequency. Then 24 पे है the limiting Lehman series. The series lies in ultraviolet region. ये ऊपर भी दो बार आ चुका है. The process of splitting of spectral lines when an atom is subjected to strong electric field is called Stark's effect. ये कुछ डिफरेंट तरीकों से MCQs पूछे गए हैं, हालांकि ऑप्शन उनकी वही तकरीबन है. Which of the following series of X-rays have maximum frequency of energy? K series. Moseley's experiment covers the range of wavelength for X-rays 0.0428 angstrom. Heisenberg's uncertainty principle is not applicable to dash particles. Macroscopic. ये असल में बड़े ऑब्जेक्ट्स पे हम अप्लाई नहीं कर सकते. नंबर 29 probability of finding the electron round the nucleus of 1s orbital of hydrogen atom is maximum at 0.29 भी है एंगस्ट्रॉम और 0.0529 नैनोमीटर भी है, तो दोनों A and B ऑप्शन होंगे. एरिया where the probability of finding electron is 0 called nodal plane. The number of electrons present in n is equals to 2, l is equals to 1 and m is equals to -1, 0, 2 plus 1 are 6. Shape of electron orbital occupied by an electron is defined by dash quantum numbers azimuthal. The principal quantum number is related to size of the orbital. Which of the following principal rules is not important in assigning the electronic configuration of atom? Heisenberg's principle. The stable electronic configuration of copper 29 is 4s1 3d 10. The electronic configuration for iron is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d6. यहां तक बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है. अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग. Which of the following molecules obey octet rule PCl3? Then a number of electrons shared in SF6 molecule is 12. The covalent radius of hydrogen is 37.7 picometer. Which of the following has highest value of ionization energy? That is fluoride. The value of third ionization energy of magnesium is 7730 kilojoule per mole. The electron affinity of chlorine is 349 kilojoule per mole. The number of bonds in nitrogen molecule is 1 sigma and 2 pi. In methanol, bond between carbon and oxygen is polar bond.
देन हमारे पास नंबर 9 पे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? इट इज आयोनिक. Ionic and coordinate covalent bonds are present in ammonium chloride NH4Cl. Bond angle of NF3 is 102 degrees. Bond angle in water molecule is 104.6. Vesper theory was proposed by Nelom and Gillespie. Which pair has trigonal planar geometry BF3 and ALH3? The geometry of SO2 molecule is angular. The molecular shape of sulfur trioxide according to Vesper theory is trigonal planar. The number of bonds in oxygen molecules 1 sigma and 1 pi. Number 18, type of hybridization of hydrogen and ammonia molecule is sp3. Carbon atom is in methane is hybridized sp3. The carbon atom in C2H4 ethane shows dash hybridization sp2. The planar structure of BF3 can be explained by the fact that BF3 is dash hybridized sp2. The geometry of barium chloride is linear. The paramagnetic property of oxygen is well explained on the basis of molecular orbital theory MO theory. The bond order of NO2 according to MO theory is 3. Which of the following molecule is paramagnetic? Okay, that's oxygen. Which of the following species has unpaired electron in antibonding molecular orbital M2 minus 2? Dipole moment of water is 1.85 diopter. Which of the following hydrogen halide has the highest percentage of ionic character? HF. The bond order of oxygen according to MOT is 2. Dipole moment of CS2 is 0 diopter. Which of the following compounds possess ionic bonding? CaO. Which of the following molecule has net dipole moment? SO2. Ionic reactions are fast. इसके साथ ही चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री. इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस very rapidly in the air, the temperature of the surrounding air decreases. Calorie is equivalent to 4.184 joule. Which of the following is not a state function? Heat. For the given process, the heat changes at constant pressure and constant volume are related to each other as प्रेशर वाली जो हीट है वो ग्रेटर होती है वॉल्यूम हीट के. द टर्म विच इज नॉट स्टेट फंक्शन, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV is equals to change in energy delta E. Number 7, which of the following statement is contrary to first law of thermodynamics? Continuous production of mechanical work without supplying an equivalent amount of heat is possible. तो ये बेटा contrary है first law of thermodynamics से. For the reaction NaOH plus HCl gives sodium chloride and water, the change in enthalpy is called heat of neutralization. Enthalpy of combustion of C2H5OH is 1368 kilojoule per mole. The quantity of heat required to change the temperature of body by 1 Kelvin is known as heat capacity. The net change in reaction is same whether it is brought about in two or more different ways in one or several steps is known as His law. Change in heat delta H is equals to 0. The law is known as His law. The bond Haber cycle is the best application of His law. Exothermic process is combustion of methane. Next chapter number 8, chemical equilibrium. For which system does the equilibrium constant Kc as unit of concentration -1? तो C ऑप्शन में हमारे पास NO2 का जो रिएक्शन है. The relationship between Kp and Kc is given by Kp is equals to Kc into RT delta N. Which of the following reactions will be favored to forward direction at low pressure? PCl5 reversible PCl3 plus Cl2. Which one affects the value of Kc? Temperature will affect. The value of delta N for given equilibrium is -2. Number 6 पे है catalyst used in preparation of ammonia from nitrogen and hydrogen is iron Fe.
Optimum pressure in the Haber's process for the synthesis of ammonia is 200 to 300 atmospheric. How much nitrogen fixation is carried out by Haber's process? 13%. The value of pKw at 25 degrees Celsius for water is 14. In case when hydroxide ion is greater than hydrogen ion, the solution is basic. अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट हो तो एसिडिक होता है, अगर OH आयन हो तो बेसिक. Ionic product of water Kw increases when temperature increases from 0 to 100 degrees Celsius 75 times. The pH of 10 power minus 3 mole per decimeter cube of an aqueous solution of sulfuric acid is 2.7. For acidic solution, pH will be less than 7. Number 14 पे है जी, the pH of 10 power minus 4 mole per decimeter cube meter cube of an aqueous solution of barium hydroxide is 10.3. So बच्चों number 14 पे है the pH of 10 power minus 4 mole per decimeter cube of an aqueous solution of barium hydroxide is 10.3. The pH of 10 power minus 3 mole per decimeter cube of an aqueous solution of HCl is 3. pH of pure water is 7. The sum of pKa and pKb at 25 degrees Celsius is equals to 14. Rainwater is slightly acidic. The pH of milk of magnesia is 10.5. The pH of human blood is 7.53. Acid having Ka greater than 1 will be strong. Number 22 पे है dissociation of H2S in water can be suppressed by addition of HCl. The pH of mixture of CH3COONA and CH3COOH is less than 7. The solution which resists a change in its pH, either an acid or base is added in it, is called buffer solution. For decomposition of ozone, Kc at 25 degrees Celsius is 10 power 55. बच्चों चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी. द अमाउंट ऑफ NaOH required to prepare 250 centimeter cube of 1 m solution in gram is 10. 2g of NaOH is dissolved in 500 centimeter cube of solution. The molarity of solution is 0.1 m. 0.1 moles of solute dissolved in 100 gram of solvent will be 1.0 molar. Which of the following is अच्छा ये मोलर था. Which of the following is an ideal solution? C6H6 and CCl4. Which of the following pair of liquid is not completely miscible? Phenol and water. Upper constellate temperature for water phenol system is 65.9 degrees Celsius. Resolves law is presented by ये तीनों तरीकों से हमारे पास ये फॉर्मूला रीअरेंज करके लिखा हुआ है, तो तीनों ठीक है. Number 10, an aqueous solution of ethanol in water has vapor pressure more than that of water. Relative lowering of water pressure is equals to mole fraction of solute. A thermometer used in Landsberger method can read up to 0.01 Kelvin. Chemical used to protect a car by preventing the liquid in the radiator from freezing is ethylene glycol. The hydration energy of Br negative ion is dash than F negative ion smaller. Which of the following gives acidic solution when dissolved in water? NH4Cl. The neutral solution is formed by sodium chloride. Number 17. The molar boiling point constant is the ratio of elevation in boiling point to mole fraction of solute. 8 gram glucose is dissolved in 90 gram of water. The relative lowering of water pressure is equals to 1 by 51. A solution of glucose is 10%. The volume is 1 gram mole of it dissolved will be volume कितना होगा जी 1.8 decimeter cube. In a mixture of 7 gram nitrogen and 8 gram hydrogen, the mole fraction of oxygen is 0.5. चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं जी. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 is +2.
Oxidation number of chromium in Cr2O7 is 6. Oxidation number of oxygen in water is -2. Oxidation number of manganese Mn is in KMnO4 is 7. Oxidation number of Cl in CaClO3 twice is +5. Metallic conduction involves the relatively free movement of their electrons throughout the metallic lattice. Number 8, which of the following is not an electrolyte? Copper metal. Electrolysis is the process in which a chemical reaction takes place in the presence of electrical energy. Electrolysis is used for electroplating. ये तमाम इसके uses हैं all. Which process is used for the extraction of aluminium? Hall Blalt. When copper sulfate is electrolyzed in aqueous solution using copper electrodes, then substance which deposit at cathode will be copper metal. Which of the following product is obtained at cathode during electrolysis of sodium chloride? Hydrogen. In an electrochemical series, standard electrode potential are arranged on the basis of hydrogen scale. Number 15 पे है जी, stronger the oxidizing agent, greater is the reduction potential. During a redox reaction, an oxidizing agent gains electrons. Percentage of hydrogen of sulfuric acid used in lead accumulator is 30%. Electrode potential of SHE arbitrarily taken in volts is 0.0 volt. The highest reduction potential in electrochemical of F2 and its value is 2.87 volt. The voltage of NICD battery is 1.4 volt. Nickel cadmium batteries. During space flights, astronauts obtain water from fuel cells. In nickel cadmium battery, the cathode is composed of NiO2. In silver battery, the cathode is made up of Ag2O. The voltage of silver oxide battery is about 1.5 volts. अच्छा, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है जी. The oxidation state of Cr changes from +6 to +3. Chemical kinetics. Chapter number 11. The rate of equation of the reaction is rate is equals to Ka to B, and A is present in large excess, then order of reaction is 1. A substance which makes the catalyst more effective is called promoter. In a multi-step reaction, the slowest step is rate determining step. When a rate of reaction is retarded by adding a substance, it is said to be negative catalyst. The Arrhenius equation accounts for the rate of chemical reaction in terms of activation energy. Velocity constant is the rate of reaction when the concentration unity. The true representative for unit of rate constant for first order reaction is per second. The unit of rate constant is same as that of rate of reaction in dash order reaction, zero order. For senses is zero order reaction. If 75% of any given amount of radioactive element disintegrates in 60 minutes, the half-life is 30 minutes. The catalyst used for reaction is copper. After 3 half lines of chemical reaction, the percentage fraction of amount left is 12.5. Then as hydrolysis of ethyl acetate has order of reaction 1. The energy of activation of forward reaction is less than that of backward reaction is exothermic. Half-life period is independent upon initial concentration in first order reaction. The optical activity is measured by polarimeter. Sugar solution hydrolysis to glucose and fructose by enzymes invertase. Conversion of glucose into ethanol is catalyzed by zymase. Then number 19 पे है, the substance which increase the activity of enzyme are called. बेटा ये हमारे पास promoter भी होता है, activator भी होता है, तो both A and B. The equation K is equals to AE is called Arrhenius equation. NO catalyst the oxidation of sulfur dioxide and sulfur trioxide. This is an example of homogeneous catalyst. The energy of activated complex is greater than reactants and products.
At the start of reaction, instantaneous rate of reaction is greater than average rate of reaction. तो बेटा ये थे हमारे फुल बुक एमसीक्यूज। आप इनको अच्छी तरह याद कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।